this video is on Financial Management MCO07 MCOM exams, and this is Unit 8, and the title of the chapter is The Sources of Long-Term Finance. It's very important chapter, and we will only discuss the important points, right? So kindly watch the video till the end, because each and every part of the video is going to be very interesting and important. And one request that those who have not subscribed to my channel, kindly subscribe the channel so that you will be notified whenever I upload a new video on it. Fine, so let's start the video, and let's start with the definition of long-term finance. Generally, this type of finance is available for above 5 years. Like you must know some key facts about long-term finance, which I have written here. Right. The first is long-term finance is required to purchase fixed assets. Now, these fixed assets generally a company, whenever it wants diversification or expansion or modernization of its units, it needs fixed assets, and to purchase those fixed assets, company needs long-term finance, long-term loans, right? And the second one, the maturity period is above 5 years, maybe 10 years, 15 years, like that. And one thing more about LTF is more the funds that is available to a company through long-term finance, more will be the growth and expansion of the company, right? So these are a few important topics on which you can define a long-term finance. Okay, now let's see what are the sources available for a company to raise long-term finance, right? Basically, there are three sources. First is owner's fund, second borrowed funds, and third miscellaneous funds or other funds. Now, these owner funds are one of the most important sources, right? I have written here three sources, that is equity share capital, preference share capital, and retained earnings or reserves and surpluses, right? So we will discuss this all in detail later in this video. And in the borrowed funds, we have debentures or bonds, term loans, and business credits. So these are the three main sources of borrowed funds. Let's move on to the third category, miscellaneous funds. And the three main important category of miscellaneous funds are venture capital, factoring, and subsidies. So you must know about this. This is very important because companies raise a lot of long-term finance through these sources. And in this unit, we'll be studying about equity share capital, preference, retained earnings, debentures, term loans, venture capital. The main sources which are likely to strike in your exams, right? So the first source is retained earnings, the most important one in fact. And retained earnings are generally, I have written a few important notes on it, जिसको हम define कर सकते हैं, right? उसको मतलब expand कर सकते हैं. The first one is these are the net profits and surplus of a company. The next one, these are kept as reserves to meet the revenue expenditure of the company. These are basically accumulated past profits. These may be used to pay dividends and bonus. These are reinvested for growth and expansion of the company, and there is no liability, no interest payment, and no cost of raising the funds. So basically, friends, रिटेन्ड अर्निंग एक्चुअली एक कंपनी का प्रॉफिट होता है. इफ सपोज एक कंपनी ने 1 लाख रुपया प्रॉफिट किया, तो वो क्या करती है, एक उसका एक छोटा सा पार्ट उसको रिजर्व करती है, सेव करती है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स. ठीक है ना, वो फंड को वो कभी भी यूज कर सकती है, उसको री इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर मान लीजिए कि अगर वो पूरा सैचुरेशन लेवल पे आ गया है, बहुत सारी प्रॉफिट जमा हो गई, वो उसको एज ए बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, डिविडेंड पेमेंट कर सकती है, तो बहुत फायदे हैं. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस. ऑन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, विच इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. एक कंपनी सबसे ज्यादा फाइनेंस इसी सोर्स से इकट्ठा करती है. एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसके ऊपर आपको डिफाइन करना है, इसको लिखना है, डिस्क्राइब करना है, राइट? Whether it is the capital raised by issuing shares. So that's very easy, that's clear. The authorized capital of a company is divided into number of equal shares
of equal denominations, right? कंपनी का एवरी कंपनी हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल. जब वो स्टार्ट होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल उसको रेज करना होता है, तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल वो वहां से इश्यू करती है. उसका अगर ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख शेयर्स का है तो 1 लाख के ऊपर वो इश्यू नहीं कर सकती है, राइट. थर्ड, द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स of the company and they have voting rights in the management of the company. They are supposed to be the real owners. Fine. There is no guarantee of income to shareholders, right? Equity shares पे income हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. So that makes these shares very risky. ठीक है? Next, these are risky and their prices fluctuates. काफी fluctuations होते हैं every hour, every minute इनके prices change होते हैं share market में. So they are very risky, right? It has no maturity. इसकी कोई मैच्योरिटी नहीं है. जैसे कि हम लोगों के कोई डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट, इनकी एक मैच्योरिटी वैल्यू है 5 years, 10 years. लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल की कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती. एंड एज लॉन्ग एज द कंपनी इज देयर द इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा, राइट? ओके. शेयर होल्डर्स कैन बाय और सेल शेयर्स एज एंड व्हेन दे विश. कभी भी बेच सकते हैं, राइट? कभी भी खरीद सकते हैं. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका. देन शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट टू अर्न हाई प्रॉफिट और हाई रेट ऑफ रिटर्न एज द रिस्क इज मोर. जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जहां पे रिस्क ज्यादा होता है वहां पे अर्निंग भी ज्यादा होती है, रिटर्न ज्यादा मिलता है, राइट? तो इक्विटी शेयर्स में ज्यादा से ज्यादा लोग इक्विटी शेयर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज दे आर रिस्की. क्योंकि वहां पे उनको इनकम जो है रिटर्न वो एक्सपेक्ट करते हैं सम हाई रिटर्न्स. दैट इज व्हाई लोग वहां पे बहुत पैसा लगाते हैं. फाइन गाइस, अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की. दिस इज आल्सो अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंपॉर्टेंट सोर्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. जैसे दिस शेयर्स कैरी ए फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड टू द शेयर होल्डर्स. ठीक है. टू प्रेफरेंशियल राइट्स. नाउ why these are called preference shares? Because these shares have two preferential rights. What are those? Guaranteed dividend. A fixed rate of dividend is guaranteed to be paid to the preference shareholders before paying it to the equity shareholders. The second one is the repayment of capital, right? So the investors, whatever they have invested, like in case if the company is winding up, okay, if it is closing down its business, then they are guaranteed to be paid back their investments before paying off to the equity shareholders. So these are the two basic preferential rights which are conferred upon the preference shareholders. Now these preference shares are of different types. Now here I have written 3 important types: cumulative and non-cumulative. Cumulative means the dividends is not paid per year, but that accumulates. वो जमा होता है. Okay, that's why it is called cumulative for certain number of years. The dividend is not paid during the year, but it accumulates year after year. And non-cumulative is just opposite of that. Then redeemable. Redeemable means they are the shares, the investment. Whatever the investment has been made is redeemed back. ये मतलब उसको एक certain period of time के बाद में उसकी पेमेंट हो जाती है. So that is redeemable. Non-redeemable just उसका opposite. Then convertible. Convertible preference shares are those which can be converted into equity shares after a certain period of time or as and when the preference shareholder wishes. Okay, fine. Then let's move on to the next one. That is, these are less risky than the equity share capital. And preference shares don't have voting rights. They cannot take part in the management of the company. Then the preference shareholders have stability of income. Their dividend is fixed, guaranteed, so they can expect a fixed rate of dividend out of that. Then they have no maturity period. That's why they are in long term finance, because long term finance का जो maturity period होता है वो काफी लंबा होता है. और प्रेफरेंस शेयर्स में भी कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर कैपिटल में नहीं होती. द सेम केस इज हियर.
Okay friends, let's move on to the next one and this is debentures or bonds. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि debentures are the acknowledgement of loan. ठीक है, जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, दे आर लोन्स टेकन फ्रॉम पब्लिक बाय अ कंपनी, दे कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दे आर ट्रांसफरेबल लाइक इक्विटी शेयर्स. फाइन. नो डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स इन इंडिया. इंडिया में बॉन्ड्स और डिवेंचर्स एक ही होता है, सेम. एंड डिवेंचर्स इशूड बाय गवर्नमेंट कंपनीज आर जनरली कॉल्ड बॉन्ड्स इन इंडिया and they are less risky. They do not have any voting rights. They cannot take part in the management of the firm. And they are of different types जो आपने junior classes में पढ़ा हुआ है, like redeemable, irredeemable, secured, unsecured, convertible and non-convertible. ये major types के debentures हैं जो हम लोग study करते हैं. Fine. Okay guys, the next important LTF is term loans. Now these loans are raised from banks and financial institutions. They are taken for a specific period and for a specific purpose. Purpose here means project. They will finance some specific project or to buy machinery or any such equipments. Then these may be fully or partly secured. Like whatever the asset that the company will buy by taking loans, those assets will be kept as mortgaged with the bank, right? Then interest rates depend on the risk of the project and the credit worthiness of the borrower. Now risk of the project, how risky the project is. जितना ज़्यादा risk होगा उतना ही ज़्यादा interest rate होगा. And again if the credit worthiness, अगर कंपनी का या जो borrower है उसका अगर market में अच्छी reputation है, then the interest rate may be lowered. Then the period may vary from 3 to 10 years. And these are the primary source of income for banks. And some of the examples of financial institutions in India which offer these term loans are IDBI, IFCI, ICICI and state financial corporations, right? So ये सारे points को आपको describe करना है exams में, right? Okay friends, देखते हैं the next LTF क्या है, and the next is a very new concept for you. And that is venture capital. Actually, in short, venture capital, यहाँ पे जो young, जो sunshine companies हैं, जिनका नाम नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं. और इनका मेन मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेने का, राइट? तो थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं. इन्वेस्टमेंट इन न्यू कंपनीज और यंग कंपनीज टू अर्न हाई रिटर्न्स. Investment is in the form of equity capital rather than providing loans. Investment is done in high risk ventures. बहुत risky investment है, and where there is risk there is returns. Okay, these firms have high mortality rate and do not get finance from other sources. इनका नाम नहीं होता. ये जितनी जल्दी शुरू होती है उतनी जल्दी खत्म भी हो जाती है कंपनीज. तो उन कंपनीज को यहाँ पे फाइनेंस किया जाता है. Okay, they help by providing professional management and latest technology. Now, venture capitalists जो होते हैं वो इन फर्म्स को काफ़ी सारी हेल्प करते हैं इन द सेंस मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, नए रास्ते बताते हैं, सो दैट दे ग्रो. ओके, वो बढ़े आगे. देन लॉन्ग टर्म गोल्स, इनका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट नहीं होता, राइट? ये वेंचर कैपिटलिस्ट का इनका मकसद लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म में नहीं सोचते. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. एंड मैं समझता हूँ कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा एंड आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.